Hello, class 11th student. Today again I am going to start chapter 5th. Topic is theory of demand. This is part 2. In the previous video I had told you about what do you mean by demand. Okay? And what do you mean by quantity demanded. So we had learned about demand and quantity demanded. Okay, what is demand? The demand is a quantity of a commodity that a buyer is ready to buy at a different possible price in a given period of time. Okay, on the other hand, quantity demand, the quantity demand is a specific quantity that a buyer is ready to purchase a at a specific price in a given period of time, that is known as a quantity demanded. In this way, demand is related to various price level and various quantity that is demanded that price. Okay, if you talk about the quantity demand is to it is related to a specific quantity that is demanded at a specific price. Okay, student, then we had learned about what do you mean by individual demand schedule. So individual demand schedule is related to different quantities that is demanded by a buyer. Okay, buyer. So individual demand schedule is related to the table that is going to show negative relationship between Px and Qx that is related to a single buyer. Okay, then we had learned about market demand schedule. The market demand schedule is related to demand of a good by all buyers. So it is related to all buyers, and individual demand schedule is related to demand of a commodity by a buyer. So this is the basic difference between individual demand schedule and market demand schedule. Individual means one. So it is related to demand of a good by one buyer. Okay. And market is related to demand of a good by all the buyer. Okay. In today's video, I am going to explain you what do you mean by demand curve. Okay, within that we are going to discuss about individual demand curve and market demand curve. Okay, after that I am going to explain you demand function. Okay, and this demand function is also of two types: individual demand function and market demand function. So let us start it. Okay, so demand curve and its slope. How we are going to draw the demand curve? So what is demand curve? First of all, its meaning. Demand curve is a graphical presentation of demand schedule expressing the relationship between different quantities of a commodity at a different possible price. So demand curve is what? It is a graphical representation. Very easy meaning is that ki demand curve is a graphical representation of demand schedule. Okay, so you can learn it also. What is demand curve? The demand curve is a graphical representation of a demand schedule. Okay, and it is also of two types: individual demand curve and market demand curve. Okay, student. Okay,
So I think you are able to understand what do you mean by demand curve. The demand curve is a graphical representation of demand schedule. Graphical representation of demand schedule. This much you can also write. And its proper explanation, it is going to express negative relationship between demand of a commodity and price of commodity. Okay, it is of two types, individual demand curve and market demand curve. Okay, now individual demand curve. Individual, whenever the term individual you find, na, individual means always it is going to relate with the one buyer. It is always going to relate with the one buyer. Okay student, so remember this, individual schedule or individual curve or individual function. Individual means one buyer. Okay, so individual demand curve is a curve showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible price of a commodity at different times. So what is the meaning of individual demand curve? So individual demand curve is that curve that is going to represent different quantities that is demanded by a particular buyer at a different price at a given period of time. So this is known as an individual demand curve. Okay, so we are going to discuss it in the figure 1. Okay, and whenever you are going to draw the figure, so on O axis there will be quantity and on OY axis we are going to represent price. Okay, and in the diagram D is the demand curve. Okay, so let us understand it. So here is your demand curve. This curve is demand curve. Okay, individual demand curve. Now this demand curve, you can see it is decreasing from left to right. It's mean it is having negative slope. It is having negative slope. So negative slope means what? Negative slope means कि if there will be change, यानी कि if you are going to increase the price, तो there will be decrease in the quantity of X. So this is known as a negative slope या फिर negative relationship between price of X and quantity of X. And ये बहुत ही genuine fact है. Okay student, whenever the price of a good is very high, so its demand is going to be low, and the commodity which price is low, its demand is going to be very high. Like take the example of potato. Potato is purchased by everyone and every day. Okay, but if you talk about the paneer, yeah, cheese, okay, so you eat it not every day, occasionally, yeah, when you want to eat it. Okay, because its prices in compared to potato it is very high. Okay, you take more example. Okay, like if you are moving, you are doing the work, marketing job, so you are doing the job between two Lucknow and Gorakhpur, so you don't prefer everyday AC ticket. Okay, you like to then use sleeper ticket if your salary is not too high. Same way if you talk about कि whenever there is sell या फिर the commodity which price is low like dresses, so you purchase it more. If you talk about the party wear dresses, so you purchase it less. Why? Because it is very high price, so you purchase it occasionally. Okay student, so in this way the commodity which price is low we purchase more, and which price is high we purchase low. Okay, so there is a negative relation. Price is high, we are going to purchase less amount. If price is low, so we are going to purchase more amount. Okay, so there is a negative relation. Every time there is negative relation between price of X and demand of X. Okay student, now here you can see कि demand curve slope downward means it is decreasing left to right. It explains that कि if price is going to be high, the demand of X good is going to be low. Okay, so it is going to explain inverse relationship between what?
between price of x and commodity of x. Okay, thus 4 unit of commodity are demanded when price is 1 rupee. तो जब आप देख सकते हो कि प्राइस क्या है 1 रुपी है, देन consumer is purchasing 4x. Okay, when price of x become 4, then he is purchasing only 1x. Okay, so in this way we can say कि there is a negative relationship between price of x and commodity of x. Which type of relation we find? Negative relation. यानी कि if price is going to be high, then demand of x good is going to be low. Okay, so that is why it is a downward sloping. Okay, now next is market demand curve. What do you mean by market demand? So whenever you find the term market, market means all buyer. Remember, what is keyword for market? Keyword for the market is all buyers. Okay, so this is your keyword, all buyers of a good. So what is market demand? So market demand curve is the horizontal summation of the individual demand curve. यानी कि it is the sum total of all the buyer. It is the sum total of demand of all the buyer. Okay. Now it shows the various quantity of a commodity that all the buyer in the market are ready to buy at different possible price. So if you notice this meaning now, so you find कि when you are going to write individual demand curve, so there will be one, yeah, particular, and when you are writing the definition, yeah, meaning of market demand, so there will be all the buyer. So that is only the difference between individual demand curve meaning and market demand curve meaning. All the statement, all the words are same in this statement. When you are writing individual demand curve, you are going to write one buyer in this line. Okay, and when you are going to write market demand, so you are going to use all buyer. Okay, why? Because individual is related to particular, yani one buyer, and market is related to all the buyer in a market. Okay student, now we are going to understand it in figure 2. In this way, the market demand is what? It is a graphical presentation of market demand schedule. तो ये line भी आप learn कर सकते हो. If you feel tough to learn this one line, okay, this one line, so you can learn this one कि market demand curve is a graphic presentation of demand schedule. Okay, but it is the best meaning of market demand. Okay, now it's a diagrammatic presentation. Here you can see कि for your comfortable या for your convenience, here it is assumed that कि in the market there are only two consumer for X good. What we had assumed, मैंने assume कर रखा है कि there is only two buyers. कितने buyers हैं यहाँ पे? केवल two buyers हैं. किसके? X commodity के. किस commodity के? X commodity के. कितने buyer हैं? There are only two buyers. Okay. So this is the demand of A buyer. This is the demand of B buyer. And what is market demand? Market demand is the summation of individual demand. यानी कि it is going to be sum total of both the buyer. यानी whatever demand is done by A and what is demand done by B, when we add we get market demand of X good. Okay, so you can see कि when price is 4 rupee, then A consumer is purchasing 1 unit. Okay, and when price is 1 rupee, then he is consuming 4x. If you talk about the B consumer, so when price is 4 rupee, he is purchasing 2x, and when 1 price, then he is purchasing 5x. Now it is your market demand. So you can see कि at the price of 4, how much is market demand? 3. How we get this 3? By adding this 1 and these 2. यानी कि this 1 is the demand of, this 1 is the this 1x is the demand of A consumer. Okay, and 2x is the demand of B consumer. So when we add this 1 and this 2x, then we get 3x, and this is going to represent market demand. Okay, when price is 1 rupee, so how much demand is done by A consumer? He is consuming
4x. Okay, and if you talk about the B consumer, so at the price of 1 rupee he is purchasing 5x. In this way, what will be the market demand? It will be 9x. How? By adding 4 plus 9. So here you can see कि when we add 4x of A consumer and 5x of B consumer, so in this way we find 9x. That is the market demand. Okay, what is market demand? It is the sum total of demand of all buyer of a particular good. Okay, so what is this explanation? A and B are the two buyer in the market. So we are assuming that there is only two buyer, A and B. Okay, A demand curve and B demand curve, and figure C is the market demand curve. When price is 1 rupee per unit, A demand 4 unit, B demand 5 unit. So in this way, what is market demand? It is going to be 9. So in this way, market demand curve also slopes downward. What it represent? It represent inverse relation between what? Price of a X good and its demand. Okay. Now, next topic is slope of demand curve. What do you mean by slope of demand curve? So slope means what? Every time when you are studying economics, so in every chapter you find the slope of indifferent curve, slope of budget line. Now you are reading demand, the slope of demand curve. Okay, in economics everything we are going to explain with the help of the table, with the help of the schedule. Okay, so when we are with the help of the diagram, so when we draw the diagram now, so we are always going to talk about the slope. What is slope? Slope means what? Ki when we draw two axes, so this is your OY axis and this is your O axis. So when there is any change, so what is going to impact on the variable that is represented on O axis? So that is considered as a slope. Slope means when there is any change in a variable that is represented on OY axis. So when there is any change, so how it is going to impact a variable that is represented on O axis. So that is known as a slope. Okay, when you are going to draw demand curve, so on OY axis we represent price of X, and O axis we are going to represent quantity of X. Agar price of X is going to be increased, so what is going to be impact on commodity X? It is going to be decrease. Okay, so in this way which type of relation we find? There is opposite direction ना, जब price बढ़ रही है तो quantity of X क्या हो रहा है? Quantity of X fall कर रहा है, decrease कर रहा है. तो which type of relation we find? We find negative relation. Okay, so जब भी आप स्लोप के लिए लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? वॉट एवर चेंज इन द वेरिएबल दैट इज ऑन ओ वाई एक्सिस अपॉन वॉट इज चेंज इन द वेरिएबल दैट इज ओ एक्सिस. तो ओ वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? प्राइस को दिखा रहे हैं, और ओ एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ एक्स. तो इसका इक्वेशन क्या जनरेट हुआ? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड एक्स, डेल पी अपॉन डेल क्यू. तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर प्राइस में चेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट क्वांटिटी पर क्या पड़ेगा. तो दिस इज़ नोन एज अ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. Okay, so what it represent? It represent that there is a, here we are representing a negative sign. Now we are imposing a negative sign. Why? Because there is inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. So remember this line. We find every time which type of relation? Negative relation between what? Price of X and quantity of X. यानी कि price of X is going to be high, its mean demand of X is going to be low. For example, take the example onion. When onions is 10 rupee per kg, so you are going to purchase more. But if it is 100 rupee per kg या 200 rupee per kg, तो obviously you are going to purchase less of it. Okay. Now it is a diagrammatic representation. Okay, so here you can see कि this is a demand curve. This D dash is what? This is your demand curve. Here there is A point and here is C point. Okay, so what is demand curve? So यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम A point से C point की तरफ मूव कर रहे हो तो क्या चेंजेस हो रहा है? A B डेल P कितना है? A B है, और डेल Q कितना है? B C है.
Okay, so this is going to, you will write AB upon BQ. It is constant at all point of demand line DT. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है. क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि इसका स्लोप क्या है? स्ट्रेट है, यानी जो ये चेंज है इन दोनों के बीच में वो कांस्टेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फंक्शन आर डिटर्मिनेट्स ऑफ demand function. Okay, so what is the meaning? Demand function show the relationship between demand of a commodity and its various determinants. यानी कि whenever we are going to write to dx is the, okay, it is its meaning functional relationship between demand for a commodity and its various determinants. So this is the meaning of demand function. Okay, it is also two types. First is individual demand function and second is market demand function. Individual is dx is the function of, function का मतलब होता है depend upon. F means function of. Function of. How you will read? Demand of x is the function of price of x, price of related good, income, taste and preference, expectation. Okay, डिपेंड्स अपॉन. सो इसका मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज डिमांड ऑफ या इंडिविजुअल डिमांड इज डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर. व्हाट आर द दीज फैक्टर? प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड expectation. Okay, now demand function. So what is demand function? The market demand function depend upon, F means depend upon price of x, price of related good, income, taste, expectation, number of buyer and distribution of income. Okay, या फिर we can read कि market demand is the function of price of x, price of related good, income, taste and preference, expected change, number of buyer and distribution of income. Let me in today's video I am going to discuss only individual demand function. Okay, now individual demand function. What is the meaning of individual demand function? Individual demand function show how demand for a commodity by an individual. We are talking about the individual ना, तो individual का मतलब क्या होता है students? Individual का मतलब one buyer. Remember this is the key word. Individual means one buyer. Okay, so individual demand function show how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinants. यानी कि किसी एक कंज्यूमर की डिमांड किन किन डिटर्मिनेट्स से इफ़ेक्ट पड़ता है, किन किन डिटर्मिनेट्स का मतलब एलिमेंट या फैक्टर, किन किन फैक्टर्स से इफ़ेक्ट पड़ता है, ये उसका एक्सप्लेनेशन, ये उस रिलेशनशिप को बताता है. यानी किसी भी कंज्यूमर की डिमांड किन चीज़ों की वजह से डिक्रीज़ करती है या किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ करती है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में. ओके, हियर इज़ गिवन इट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. डी एक्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई मीन्स कंज्यूमर इनकम, टी मीन्स कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई मतलब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. ओके स्टूडेंट, now first point is what? First point is own price of commodity. So in my own language, in very simple language, what is this? So price of x is the function of qx. यानी कि price of x depend upon it's mean that कि commodity x, demand of x good is depend upon price of x. यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स, हाउ मच क्वांटिटी अ कंज्यूमर इज़ गोइंग टू डिमांड, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स इज़ डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ एक्स. ओके, इट इज़ डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ एक्स. So when you are going to write, तो px is the function of qx, यानी कि there is always we find negative relation. It's mean what? यानी कि price of x is high, it's mean quantity of x is low. Okay,
If price of X is low, it's mean quantity of X is high. So for example, you can take this example, Apple phone. Apple phone, its price is too high, so its demand is very low. It is only demanded by very professionals, whose salary is very high. They are going to purchase Apple phone. If you talk about the Mi set, Redmi, so its price is low and we are finding too much feature in that, so that is why its demand is high. Okay, so I think you are able to understand कि जिस भी commodities की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड कहीं ज़्यादा होती है, और जिस commodity की प्राइस हाई होती है उसकी डिमांड कम होती है. Like luxurious car, take the example of Pulsar, take the example of Apple phone. If you talk about the low price, so you can take the example of Mi set. These are very low cost phone and having lot of feature. Okay, so because of that, if you talk about the number of phones that is sold, so in compared to Apple, Mi set is in quantity it is too much sold. Okay, so demand depend करती है हमेशा ही price के ऊपर. Okay student, so what is written in your book? Other things being equal, यानी अदर थिंग्स बींग्स इक्वल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. सो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि एक्स गुड की इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड अपॉन इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन. ओके, सो यानी ऑल दीज फोर इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. तो जब ये सारे कांस्टेंट हो गए तो इन दो के बीच का हम रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे. इन दो के बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव. सो अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब ये फोर एलिमेंट क्या होने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं. विथ अ राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम होना, तो its demand is going to decrease. Okay, and with the fall in its own price the demand extend. So which type of relation we find? We find inverse relation between what? Price of own and commodity. Okay, तो this is known as a law of demand. इसको हम law of demand भी कहते हैं और इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हाँ, in next topic. Now next is price of related good. Related good means what? So let me understand what do you mean by related good. So if you talk about the related good, related goods, so related goods are of two types. First is substitute good. Substitute, okay, substitute goods. What is substitute good? That can be used in place for each other. For example, tea and coffee. ओके, आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो, मॉर्निंग में सभी को चाय या कॉफ़ी की आदत होती है, हैबिट्स होती है. तो अगर आपको मान लो कि कॉफ़ी नहीं मिला तो आपने टी पी लिया, टी नहीं मिला तो आपने कॉफ़ी ले लिया. तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ सब्सटीट्यूट गुड, जिसको हम एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूट गुड. मान लो आपको कुछ नोट करना है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द पेन, सो यू कैन राइट विद द पेंसिल. ओके, सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ सब्सटीट्यूट गुड. अगर आपको बाइक नहीं मिली तो आप स्कूटी से चले गए. ओके, तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट गुड. इसके अलावा बहुत बेस्ट एग्जांपल अगर आप करंट फिनोमेना की बात करें तो बहुत अच्छा एग्जांपल आपका है स्विगी एंड जोमैटो. ओके, यू नो मेनी पीपल लाइक्स टू ईट होटल फूड एंड अदर थिंग, तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम स्विगी और जोमैटो. अगर मान लो आपको लगता है कि जोमैटो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो आप स्विगी से ऑर्डर कर देते हो. अगर स्विगी अगर हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तो आप जोमैटो से ऑर्डर कर सकते हो. इसी तरह अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये दोनों वेबसाइट क्या है? सब्सटीट्यूट है. इफ़ यू आर गेटिंग लेस सेम प्रोडक्ट एट लेस प्राइस इन एट अमेजॉन साइट, तो यू आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम अमेजॉन. ओके, सो सब्सटीट्यूट मतलब दैट इज़ गोइंग टू डू द सेम फंक्शन, यानी कि सेम नीड को फुलफिल करने वाला है.
ओके तो जैसे आप कहीं जाना चाहते हो, यू वांट टू ट्रैवल, तो यू कैन ट्रैवल बाय द बाइक, यू कैन ट्रैवल बाय द स्कूटी. ओके इफ़ यू वांट टू राइट, तो यू कैन राइट विद द इंक पेन, बॉल पेन, पेंसिल. तो दीज आर व्हाट, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड. टी एंड कॉफ़ी, okay, these are the substitute good. Okay, so substitute good are what, that is used in place of each other. Okay, now next is what, next is complementary good. So what do you mean by complementary good? I think you are not able to know it. What do you mean by the second commodity is complementary good. What is complementary goods? So complement का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना, समझ रहे हो, एक दूसरे को हेल्प करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना. कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, यानी उसके बिना वो क्या है, परफेक्ट नहीं लगता है. तो ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना. कॉम्प्लीमेंट इन इकोनॉमिक्स टर्म, when goods are used together, when two goods are used together, that is known as a complementary good. For example, आप ले सकते हो बैट, बॉल. ठीक है, बैट बॉल आप ले सकते हो, या फिर कार एंड पेट्रोल. ओके, या फिर ब्रेड एंड बटर. So what is, if you want to play the cricket, so you cannot play the cricket only having the bat या only having the ball. You require both the thing. तो what is this bat and ball? These are the complementary good. Same way, अगर आपके पास इंक पेन है और उसमें इंक ही नहीं है तो क्या हुआ, it is useless. यानी कि इंक और इंक पेन both are complementary good. ब्रेड एंड बटर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कार एंड पेट्रोल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड. आपके पास कार है, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो यूजलेस, यू कैन नॉट यूज़ कार. ओके, सेम वे बाइक एंड पेट्रोल. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री मीन व्हेन टू गुड्स आर यूज्ड टुगेदर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर वांट, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, लेट मी अंडरस्टैंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्स्टिट्यूट गुड. These are the goods which can be substitute for each other, such as tea and coffee, ball, pen, ink, pan. In case of such good, increase in the price of one cause increase in the demand of other, and decrease in the price of one cause decrease in the demand of other. Okay, so increase in the price of coffee, for example, will increase the demand of tea. The consumer will shift for the consumption of the coffee to the consumption of tea. यहाँ पे क्या आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है? एक्सप्लेन ये किया जा रहा है कि चूँकि टी और कॉफ़ी बोथ आर व्हाट, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अगर आप सपोज़ करो कि टी की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है और कॉफ़ी की प्राइस एज इट इज़ रहती है. ओके, तो अभी क्या है कि टी की प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ कर गई, डबल हो गई, तो ऑब्वियसली अभी आप क्या परचेज़ करोगे, कॉफ़ी परचेज़ करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक की प्राइस में इंक्रीज़ दूसरी कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देता है. तो देयर वी फाइंड पॉजिटिव रिलेशन. ओके, हाउ टू लेट मी अंडरस्टैंड इट. ओके, सपोज करो कि यू कैन टेक एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी. ओके स्टूडेंट, टी सपोज करो 1 पैकेट है, इट इज़ अवेलेबल 20 रुपीज़, and coffee it is available the same amount is 40 रुपीज़. ओके, नाउ टी की प्राइस बढ़ जाती है और ये भी क्या हो जाता है, 40 रुपीज़ हो जाता है. ओके, और कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी स्टिल इट इज़ अवेलेबल सेम पैकेट एट 40. तो अभी क्या है, लोग टी की बजाय क्या यूज़ करने लगेंगे, कॉफ़ी. यानी कि जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज़ करेगा तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, demand of coffee will increase. So in this way, price of X and demand of Y, these are related positively. Remember that price of X and demand of Y. लोग टी की जगह क्या यूज़ करने लगेंगे, कॉफ़ी को. Okay student, so that is given here. Now complementary goods. So I had told you what is complementary good. So complementary goods are those goods which complement the demand for each other, therefore demand together. तो जब भी दो goods एक साथ demand किए जाते हैं तो that is considered as a complementary good, like a pen and ink, bread and butter.
Okay, so a fall in the price of one cause increase in the demand of other good, a rise in the price of one cause decrease in the demand of other good. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाउंटेन प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन विल इंक्रीज, सो इसकी डिमांड तो डिक्रीज होगी ही होगी, प्लस इसकी जो इंक की डिमांड है उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. वाई? बिकॉज दिस इंक इज यूज्ड विद द फाउंटेन पेन. So if the price of fountain pen falls, the demand will rise and plus ink demand is also increase. How? Let me understand it in more simple way. Okay. यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाउंटेन पेन है और एक तरफ इंक है. चूँकि ये दोनों ही क्या है, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बोथ आर द यूज्ड टुगेदर, तो दीज आर नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, अगर फाउंटेन पेन जो है, फाउंटेन पेन की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है, फाउंटेन पेन की प्राइस क्या है, इंक्रीज़ कर रही है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड ऑफ फाउंटेन पेन विल डिक्रीज़, क्योंकि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी. ओके, दूसरी तरफ इंक है, तो प्राइस ऑफ इंक जो है, प्राइस ऑफ इंक वो चेंज नहीं हो रहा है. इस बार का मतलब क्या होता है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन फिर भी जो इंक की डिमांड है, फिर भी जो डिमांड ऑफ इंक है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. वाई? क्योंकि ये दोनों एक साथ यूज़ करते हो. जब आप फाउंटेन पेन परचेज नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी इंक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे इफ़ प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन विल इंक्रीज, तो डिमांड ऑफ फाउंटेन पेन एज वेल एज द डिमांड ऑफ ink both decreases. Why? Because both are used together. Okay, now next here is given the difference between substitute good and complementary good. So what do you mean by substitute good? Those good which can be interchange for each other, yani we can use one good in place of another, like scooty and bike. Okay, complementary good. What is complementary good? The goods which are used together, which are going to be used jointly. So these are known as a complementary good, like car and petrol. Okay, without car, without petrol, you cannot drive the car. Okay, so these are demanded together. Okay. Now, when price of substitute good increases, demand for given good rises, vice versa. यानी कि when we are going to talk about the related good, now तो we are going to discuss about the price of x and demand of y. हम इन दो के बीच को रिलेट करते हैं, तो ऐसे में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव. यानी प्राइस ऑफ x इंक्रीज़ करेगा तो रिस्पॉन्स में डिमांड ऑफ y इंक्रीज़ करेगा. जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, अगर टी की प्राइस डबल हो जाती है तो हम टी को कंज्यूम नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या परचेस करने लगेंगे, कॉफ़ी. तो यानी जब टी की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो किसकी डिमांड बढ़ी, कॉफ़ी की. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज सब्सटीट्यूट गुड. ओके, यहाँ पे एग्जांपल आपको टी, कॉफ़ी, पेप्सी, कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन दिया है. ओके, नाउ टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड. दीज आर यूज टुगेदर. सो व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, डिमांड फॉर गिवन गुड फॉल्स, वाइस वर्सा. यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई गुड. दीज आर रिलेटेड नेगेटिवली. यानी कि अगर फाउंटेन पेन की प्राइस अगर इंक्रीज़ करेगी तो इसकी डिमांड तो डिक्रीज़ करेगी ही करेगी, प्लस जो इंक है, फाउंटेन पेन में जो इंक यूज़ करता है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, फाउंटेन पेन में यूज़ होने वाले इंक की डिमांड कम हो जाएगी. ओके, सो पेन, इंक, ब्रेड, बटर, कार एंड पेट्रोल. यानी कि अगर क्या है, मान लो कि कार की प्राइस बहुत हाई हो रही है तो लोग कार कम परचेज़ करेंगे. जब कार कम परचेज होगी तो उसकी पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जब कार ही नहीं खरीदी जा रही है तो उस पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सारे इंडस्ट्रीज शट डाउन कर दिए गए थे. जितने भी ट्रेन्स हैं और ट्रैवलिंग है सब पे बैन लगा दिया गया था. ओके, तो जब ट्रैवलिंग ही नहीं हो रहा है, जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो पेट्रोल की डिमांड होगी नहीं. ओके, तो दैट इज़ हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो जब भी आप इनकम ऑफ कंज्यूमर को एक्सप्लेन करते हो तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टू गुड. सो इनकम
यानी कि y. Whenever you are going to explain income of a consumer, तो it is explained for two type of commodity, normal good and inferior good. Inferior goods. Okay student, normal good means what? देखो वो गुड्स नॉर्मल गुड्स बोले जाते हैं अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ कर रही हो और आप जिन कमोडिटीज़ को पहले से ज़्यादा परचेस करते हो, यानी कि डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज़, डिमांड इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज, तो देयर इज़ पॉजिटिव। जिन कमोडिटीज़ को आप अपनी इनकम बढ़ने के साथ और अधिक परचेस करते हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और इन्फीरियर गुड नेगेटिव रिलेशन होता है। ओके, यानी कि इनकम इंक्रीज़ करने पर जब डिमांड क्या होती है? डिक्रीज़ करती है, तो उन गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम कम है तो आप साइकिल यूज़ करते हो, लाइक अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अर्निंग पीपल, तो आप साइकिल से ट्रैवलिंग करते हो, ठीक। और जब आप जॉब में होते हो तो यू प्रीफर बाइक, तो इन दिस वे साइकिल इज़ इन्फीरियर गुड एंड बाइक इज़ नॉर्मल गुड। ओके, तो आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी तो आप बाइक लोगे, ठीक। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपकी इनकम कम है तो आप सपोज़ करो ताज़ा टी यूज़ कर रहे हो या कोलगेट पेस्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ कर दी जाती है तो आप कोलगेट यूज़ करने लगते हो, क्लोजअप यूज़ करने लगते हो या और हाई फाई ब्रांड यूज़ करने लगते हो, ठीक। तो दैट इज़ नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड। ओके स्टूडेंट, okay, so this is the difference between normal good and inferior good. Normal good are those in case of which there is a positive relation and other things remaining constant. Okay, I'm going to discuss in the next video. Thank you.